So from today we are going to study the Power BI, each option by option, starting with Power Query Editor. So this view, whatever the view you are seeing, this is called as model view. Okay, this default view, not default view. This default view is called as report view, but this tab, whatever the window you are seeing, this is called as model. Okay, this whole tab is called as model. So this is called as front end. And इसके पीछे जो back end होता है, that is called Power Query Editor. So how you will get to Power Query Editor by clicking on Transform Data. Once you click on this Transform Data, then you will enter into the back end. That is Power Query Editor. That is use the Power Query Editor to connect, prepare, and transform data. That is the function. So once you click on Transform Data, we enter into the backend. This is called as Power Query Editor, where we do ETL activities. ETL मतलब क्लीनिंग एक्टिविटीज. डेटा को हम इधर क्लीन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो जो डेटा हमारे पास क्लाइंट देते हैं वो हमेशा क्लीन डेटा नहीं रहते. क्लाइंट को लगता है कि अपना डेटा 100% क्लीन है, बट इन रियलिटी द डेटा वुड बी 0.1 और 0.2% क्लीन, not even 1%. So that we need to clean. So इन क्लाइंट्स ओपिनियन उसका डेटा बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का रहेगा एंड बहुत मिनिमल ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं, ये उनका एक्सपेक्टेशन है. बट इन रियलिटी client gives you 1 week of time. In real time it will take at least 5 to 6 months to clean that data, only cleaning the data. Forget about visualization. So this is one of the important things which you need to convince the client. Client both adamant रहते हैं. They won't listen to you. Whatever you are showing, they won't listen to you. You need to convince them through documentation. So that is the reason why documentation is very, very important. So I'll show you how to do that documentation also. So now let's start with Power Query Editor. So what is Power Query Editor? This is your interview question. So what they will ask you, tell me about ETL tool in Power BI. Then you have to talk about Power Query Editor. What is Power Query Editor and what are the options are there and what you have performed there. What options you have performed in that transform data or Power Query Editor. So first option is file. So in file, whatever the options available here, the same options also available in the home ribbon. So we will study in home ribbon only. In file, apart from these three options, you have save as, okay, and then options and settings. So this is not that much important because this help is same as this help tab or help ribbon. So whatever options are available, we will discuss that in home ribbon only. So when you click on this, you have three options: close and apply and close. See, like let's connect to some data source. So in order to connect the data source, we have two options. Either you use front end, that is the model, to connect to the data using this get data. Once you click on this, you have multiple options. If you want other than these options, you need to go to more. This is one option of connecting the data set or data source. Then other sources. Here you can see these are the commonly used sources. So these are multiple sources. So there are more than 250 plus sources. Like if you want to go even more precise, 500 plus sources as of now, because every month it keeps on adding. Okay. So in interview, you can remember, you can say just 250 plus sources. So this is get data. These are common data sources. Apart from that, इसके अलावा और बाकी data sources भी रहते हैं. So all these are Microsoft related data sources. Excel workbook, data hub और SQL server और Dataverse. And then here also इधर भी आपको recent sources मिलेगा. Recent sources मतलब जो भी data sets या data sources आप recently use किया वो list रहेगा इधर.
सो इसका जरूरत क्या है? ईज ऑफ एक्सेसिंग द डेटा। तो आप एक ही डेटा सेट बार बार यूज कर रहे हो, then it is easy to access. So for that you have given recent sources. That is first advantage. Second advantage, जब आप SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो एंड देन बार बार उस SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, then it is the easiest way to connect. Once you start using these recent sources, it won't ask you the credentials. Once you connect, it won't ask the credentials next time. So that is one advantage. But in real time, there are two options. That is, in SQL Server connection, we have two options. One is Windows authentication, one is SQL Server authentication. Windows authentication यूज किया तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पूछते, लेकिन SQL Server authentication यूज किया तो लॉगिन आईडी पासवर्ड कंपलसरी पूछेगा. So if you use the Windows authentication, you can connect directly, but in real time we won't be using Windows authentication. So by using SQL Server authentication only you will connect. So for that you always need login ID password. So that is about recent sources. Same वैसे ही recent source इधर भी रहते. Recent source, instead of get data in model you have new source. So in new source also you have multiple sources. Same जितना data sources आप get data से connect कर सकते हो, उतना ही data sources आप new source से भी connect कर सकते हो. For example, let's take this Excel workbook only. Why I am taking this Excel workbook? Why I am taking this particular data set? Because आपको real time में questions जो भी scenarios पूछते हैं, like if they take any data set, they will take this particular data set only, this financial data set. In real-time interviews also, they will ask you questions and scenarios by showing you this data set only. Okay, so now मैंने ये data set लिया, कैसे लिया? Same like get data में हम कैसे connect किया? Using new source also, I can connect to this same data source. Then, whatever the changes I apply here, whatever the changes I apply here, मतलब changes मतलब इस data, whatever the data आप देख रहे हो, इसके ऊपर जो भी changes मैं करता हूँ या modifications करता हूँ या transformations करता हूँ, then Power BI क्या करते हैं, अपना memory में ये सब store करते हैं step by step process. तो ये हमको याद रखने का जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परफॉर्म्ड सम 15 स्टेप्स ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट. ये डेटा को पूरा क्लीन किया या मॉडिफाई किया, ओके, एंड देन कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किया. ये सारा स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप ये पावर बीआई नोट करते रहते इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड स्टेप्स. Where you can see these applied steps. Once you go to this view, a view ribbon, आपको by default राइट साइड से राइट साइड में applied steps दिखता है. अगर किसी को भी नहीं दिख रहे, उसका मतलब है कि query settings ऑफ होगा. Once you click on this query settings in the view ribbon, then you will get this applied steps tab. Okay, ये applied steps क्या करते हैं? This applied steps, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो भी हम इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस करेंगे, ये पावर बीआई इधर नोट्स मेंटेन करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या किया, सेकंड स्टेप क्या किया, थर्ड स्टेप क्या किया. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, दिस इज द कंट्री कॉलम. सो इन रियल टाइम, फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ऐसा कनाडा करके बड़ा नाम है, यू डोंट वांट टू सी दिस नेम एज कनाडा. उसको इस कनाडा को CA करके रिप्लेस करना है, जर्मनी को GR, फ्रांस को FR, ऐसा रिप्लेस करना है. देन हाउ आई कैन रिप्लेस कनाडा एज CA? सो इन दिस ट्रांसफॉर्म रिबन ये सब प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अभी हम होम रिबन पे है, अभी हम प्रेजेंटली क्या पढ़ रहे हैं, ये क्लोज एंड अप्लाई के बारे में पढ़ना है. उसके लिए मैं एक प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये क्लोज एंड अप्लाई समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू हैव सम बेस, right? So that I'm explaining. So ये कनाडा को रिप्लेस करके CA करके करना है. Then I need to go to this transform ribbon and then use replace values, and then I want to replace it. And remember, Power BI जो है ये केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव मतलब अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स को डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा.
जैसे SQL सर्वर में हम सब कैपिटल लेटर्स में लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज SQL सर्वर इज केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पावर बीआई को फर्क पड़ता है। नेम आप एज इट इज लिखना है, इधर कनाडा सी कैपिटल लेटर and all are small letters. You have to write only like this compulsorily because this is case sensitive. So I want to replace it with CA. So once I click OK, all the values of Canada got replaced with CA. It just step A, it got noted down by the Power BI itself, that is replaced value. So ऐसा इसका advantage क्या है? आप कुछ रिपोर्ट बना रहे हो, ऐसा 10-15 स्टेप्स बना लिया, देन ये पर्टिकुलर सीए करके इधर कैसे आया आपको समझ में नहीं आता है। डेटा को देख के इधर सीए है, इधर जर्मनी है, फ्रांस है, मेक्सिको है। तो सीए मतलब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कैलिफोर्निया, इट कैन बी कैनबेरा और एनीथिंग। ओके, कैनबेरा इज इन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया इज इन यूएस, बट बोथ आर some states or cities, they are not country. Okay, लेकिन Germany is a country, France is a country, Mexico is a country. So based on this you are inferring, this is called logical inference. You are inferring that CA should be some country name. So I'm supposing it as Canada. In real time also you should सपोज सपोज द डेटा लाइक दिस। सपोजिंग द डेटा मतलब आपको जो डेटा सेट दिया जाता है उसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रहती। सो क्लाइंट क्या बोलते हैं आपको, इन्फर करो या फिर सपोज करो। बेस्ड ऑन दैट यू ड्रॉ योर कंक्लूजन। सो इन दैट सिनेरियो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग, दैट इज हम जो भी वैल्यू से उसके बेसिस पे एक जनरलाइजेशन करके और जो थर्ड वैल्यू है या कुछ वैल्यू से उसको इन्फर करेंगे। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो ये सीए करके कैसे आया आपको समझ में नहीं आता डेटा को देख के, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेक दिस अप्लाइड स्टेप्स। सो यू नीड टू चेक स्टेप बाय स्टेप। ऐसा 16 स्टेप्स है, तो स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते हो। उसको अवॉइड करने के लिए दिस Power BI would name this function or this transformation like this replaced value. So you might think that it can be replaced value. So once you click on this setting symbol on the replace value, you will get this tab. In that आपको दिखेगा कि कनाडा को सीए करके या सीए कैसे आया, that is replaced with Canada ऐसा। This is one scenario. Second scenario, ये आपको पता चल गया सीए करके कैसे आ गया। देन यू वांट टू चेंज दिस सीए टू समथिंग मीनिंगफुल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सीए, देन यू कैन चेंज दिस सीए टू सम अदर थिंग लाइक दिस। ओके, सो वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल कनाडा करके आपको समझ में नहीं आया, यू वांट टू सी इट कैपिटल लेयर टू स्मॉल ए, व्हाई, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट और फॉर योर सेल्फ फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, इट कैन बी एनीथिंग, it is one scenario. Okay, this is the purpose. ओके, दिस इज द पर्पस। सो नाउ अभी क्या किया, हम कुछ चेंजेस किया, ये डेटा सेट के ऊपर कुछ चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, एक कनाडा को सीए करके या फिर कैपिटल से स्मॉल किया, ऐसा कुछ चेंजेस किया। देन ये चेंजेस को ऑटोमेटिकली ये फाइनेंशियल डेटा सेट, दिस इज वन डेटा सेट, इस डेटा सेट के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। तो इसको सेव करने के लिए यू नीड टू सेव दिस। हाउ यू कैन सेव दिस, so ये जो फाइल है, whatever the data set you are seeing, this file is stored under one extension that is called .pbix। जैसे एक्सेल शीट का एक एक्सटेंशन रहते हैं, CSV फाइल का एक एक्सटेंशन रहते हैं, SQL सर्वर का जो भी फाइल है उसका भी एक एक्सटेंशन रहते हैं, वैसे पावर बीआई डेस्कटॉप में जो भी डेटा सेट के ऊपर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर रिपोर्ट बना रहे हो उसका भी एक एक्सटेंशन रहेगा, that is .pbix. I'll show that later. So that is the extension. So उस फाइल के अंदर ये डेटा, जो भी डेटा है, ये डेटा स्टोर किया जाता है।
मतलब फाइल मतलब .pbix फाइल के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है। उस फाइल में ये जो डेटा है related, whatever the code behind this data, that would be stored. So, but this data won't be stored automatically. उसको store करने के लिए you need to apply these changes. Once you click on this close and apply, this what is getting closed, ये Power Query editor would get closed. This window would get closed, and what opens? This front end would open. तो फ्रंट एंड ओपन होता है, इधर आप देख सकते हैं अप्लाई चेंजेस एंड डिस्कार्ड चेंजेस. That is, there are pending changes in your queries that haven't been applied. So if you apply, then whatever the transformations we have done here, ये permanently मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है. अगर हम डिस्कार्ड कर दिया, then these changes won't get stored permanently. So that is the close and apply. सो क्लोज एंड अप्लाई मतलब एक विंडो क्लोज हो जाएगा एंड दिस फ्रंट एंड वुड ओपन एंड ऑल द चेंजेस वुड बी सेव्ड. So second option, that is the first option, close and apply. Second option is apply. If you just click on apply, then this window won't get closed, only the changes would get stored. That is creating connection in model and loading data to model. Model is front end, right? So 700 rows got loaded where? In the front end. This is the front end. Now you can see there is no pop-up. पहला हमको pop-up आते थे, that is apply changes and discard changes. अभी नहीं आ रहे because those changes have been saved permanently. Now where you can see those changes? In the data view. This is called data view. There are three views, right? Report view, this is data view, this is model view. So in report view, we prepare reports. That is visualization. We create visuals here. Data view, you can see the data. On the country column, you can see these changes. So that is what apply. So close and apply means this window would get closed. Only apply means only the changes would get applied, but ये window वैसे की वैसे रहेगा. If you click on close, just this window would get closed without applying the changes. That is what the close means. That is, the pending changes won't get copied to the memory permanently. That is what three options mean. So three options का अपना अपना significance रहते हैं. So why we use only close? So sometimes हमको सिर्फ डेटा के ऊपर experiments करना है. You don't need to apply anything. सिर्फ देखना है कि ये conditions काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर डेटा कैसे है, उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किया तो काम कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने. देन यू विल डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड यू विल जस्ट क्लोज. दैट्स इट, देयर एंड्स द मैटर. अप्लाई मतलब इधर ही आप एक टेबल 10 टेबल से एक टेबल पे काम कर रहे हो, चेंजेस किया, सिर्फ अप्लाई करना है. सिर्फ अप्लाई करके बाकी चेंजेस बाकी टेबल्स में करते जाना है. सो दैट इज व्हाट अप्लाई मीन्स. क्लोज एंड अप्लाई मीन्स इधर काम हो गया इस विंडो पे, आप पावर बी मॉडल में जाना है, मॉडल में जाके उधर काम करने, देन क्लोज एंड अप्लाई दिस चेंजेस. दैट इज व्हाट दिस थ्री ऑप्शन मीन्स. दैट इज close and apply and close. Then new source. New source is equivalent to get data in front end, that is model. Same thing we use as new source in Power Query editor. Then what is the difference is that when you use front end, when you use this get data, you will get three options. That is load, transform data, as well as cancel. These are the three options. That is load, transform data, and cancel. But when you use this new source, for example, this financials, I selected. So you will get three options: load, transform data, and cancel. But when I use this new source, I will get only two options, that is OK and cancel. If I click on OK, this dataset would get loaded to Power Query editor. Right, there is no transform data or load option. These two options won't be there. You will have only OK and cancel.
So this is a basic interview question. They will ask you, what is the difference between get data and new source? That is one question. Second question, what is the difference between new source and recent sources? Okay, recent sources मतलब ये financial samples अभी हम create किया, अभी हम connect किया. So whatever the sources we used recently, that's data sources would be here. Then this is the new source, this is recent source. Then enter data. What is enter data? So Power BI use करके आप कुछ डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो लाइक वॉट एवर आपका टेबल्स इधर किसी भी डेटा सोर्स में रह सकते हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग न्यू सोर्स वैसे ही इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा सेट इन पावर बीआई इटसेल्फ मतलब आप टेबल खुद पावर बीआई में बना सकते हो क्रिएट कर सकते हो ये क्यों क्रिएट करना है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग हम जब करते हैं या फिर अ, कुछ प्रोजेक्ट्स में उसको ही क्यूए बोलते या फिर यूनिट टेस्टिंग बोलते कुछ वोकैबुलरी ऐसा भी बोलते कि एससीटी ऑल आर सेम वोकैबुलरी कैन बी डिफरेंट वो कंपनी के ऊपर आपका वोकैबुलरी डिफरेंट होता है बट थिंग्स आर सेम दिस इज फॉर बेसिकली टेस्टिंग पर्पस दैट इज वन वन पर्पस अदर पर्पसेस क्या है to enter data manually, which is required for your project. So how you can enter the data? This is column 1, this is column 2. You can create any number of columns like this. So, and if you don't want some unnecessary, like unnecessary columns are there. If you want to delete, then click on right click and then you will have this option called delete. So right now I'm taking two columns for demo purpose. So this is how I should enter the data in this enter data table. So I'm just giving some random values. Okay, it doesn't matter what are those, what values are there. So these are my values. One is numerical value and one is character data type. These are the values I am given. So I can change the headings of the column also by right clicking or double clicking. You can change the columns. This is number ID, whatever it is, doesn't matter. So this is, for example, name. And here you can see the table name. Here you can write the table name. So I'm giving table name as enter data. So once I click on OK, this data, whatever the data is there, it gets stored as a table that is enter data. This is one table I have created. On this, I will perform some transformations or I will practice it. I will create something, for some transformations or I will do some practicals on this. So this is one form of creating data. Then what is the another form? So you have some data source in your Excel sheet or you have some data source in your SQL server or Databricks, whatever it is. Data source can be anything. So for example, let's say my data source is SQL server. So this is my table. So if I want to copy this, I just click on this copy and I go to Excel sheet and I'll place that all the values in that Excel sheet. So once I place those values, I can use that experiment as an experiment. Like if I want to do some transformations there in the Excel sheet, or I can do the same thing in Power BI also like this. So like this, I can copy and you can delete this extra rows. Like how you can delete the extra rows by clicking on this left side. So by selecting the as a row as a whole, you can delete these extra rows.
So like this, you can copy. How you can copy? Just go to the SQL server, then click on this left side corner, then the whole table would get selected, and then Control C, and then come to Power BI, Control V, right? So this is how you copy the data. You can give some name. This is I'm giving as dummy table. In real time also you will give the same name because this is called dummy table for practice purpose or for testing something, some concept. This is how you use the enter data. So once you click on OK, the table would get stored like this. This is called EMP table. The table is stored as dummy table. Here you can do all the transformations. This is one form to enter the data in Power BI. So जो financials data set है इसका data source, the data source for this data set is stored somewhere in our local system, हमारा downloads folder में या किधर भी है. That is called, ये source में जब हम जाएंगे like राइट साइड आपका अपडेट स्टेप्स में ये source करके दिख रहे हैं. इसमें जो सेटिंग्स से सिंबल है उस पर क्लिक किया तो आपको सोर्स दिखते हैं. दिस इज द सोर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल डेटा. मतलब जो भी डेटा सेट है उसका सोर्स इधर दिखेगा. बट व्हेन यू सी दिस एंटर डेटा, वंस यू क्लिक ऑन दिस सोर्स, it won't show the path. So if you go to this financials, if you click on this source, it will show the path. This is the path. This is the file path for this data source. लेकिन enter data जब आप यूज करते हो, यूज करके डेटा सेट क्रिएट करते हो, then if you go to this source, it won't show that path because the data is created in Power BI itself. That is the reason why it won't show the path. So this is your certification question. In certification exam, they will ask you this question. That is in entered data, either it can be MCQ question or it can be what is that statement type, multiple choice statements, 1 2 3 4 statements type they will give you, or it can be MCQ. So in enter data, the file path would be there like this, or in enter data, file path won't be there. So this is about the enter data option. So this in real time we use for first one testing purpose, second for testing some concept, third one for doing some transformations and checking the data. So these two are different. Testing is different, and doing some things for practicing is different. Why it is different? That I'll explain. Once we enter into the model, or once we complete this Power Query editor, then I'll explain what is unit testing and how we do unit testing. Okay, so this is about enter data. Then next option is data source settings. What is this data source settings? So this data source settings is nothing but whatever the data sets you are having, for this you will have the paths. These are the paths. आप इधर एक ही डेटा सोर्स है, डेटा सेट है, बिकॉज एंटर डेटा एंड डमी टेबल इस इन दोनों को पाथ्स नहीं रहेगा क्योंकि ये पावर बीआई में क्रिएट किया. So in order to get more clarity, let's connect to SQL Server also and get some tables. So अभी हम SQL Server को connect कर रहे हैं. Click on SQL Server. इधर आपको सर्वर का नेम देना है. What is the server name? How to get the server name? So now open SQL Server. This is SQL Server. This is SSMS. Okay, here just click on this connect and database. Now you will get the server name. This is called server name. So this you can copy and then go to this Power BI and this server name you paste it. This is the server name. And once you click on OK, because I'm using Windows authentication, so I don't need any login ID and password. So once I click on OK, it gets connected. Then what is this advanced option? I will show you later. Here you can write SQL queries and you can import the data. This is the connection between SQL Server and Power BI. This I will explain later. So for now, I'm connecting the SQL Server and getting some tables. So this is the name of my SQL Server. So once I click on OK,
I get access to the SQL server of all the databases. This is the SQL server. मेरा SQL server के अंदर जितना भी databases है सब के सब इधर आ जाते हैं. So I'm using DB8PM. उसके अंदर जो भी tables हैं इधर सब दिखेगा आपको. So I'm connecting EMP table. Click on EMP table. This is my EMP table in SQL Server. Okay, this is called preview window, data preview window. इधर आपको डेटा को देखने के लिए मिलता है कि कौन सा डेटा है, ये किसके लिए हम रियल टाइम में ये विंडो लाइक ये व्यू हम किसके लिए देखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कुछ रिपोर्ट बना रहे हो, आपके पास ऐसा बहुत सारा टेबल्स रहते हैं, डेटाबेस या टेबल्स ज्यादा रहते हैं, तो आपको कौन सा टेबल्स सेलेक्ट करना है वो कैसे पता चलता है आपको. Then you need to check these tables like this. So instead of clicking this, selecting this, you need to just click on here EMP, or you need to click on these duplicates. Once you click on this, it will show the preview. Like उस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम से या डेटा है वो दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको ये फुल नेम कॉलम चाहिए, देन क्लिक ऑन दिस डेमो टेबल एंड यू कैन सी ओके ये फुल नेम कॉलम इधर है, तो मुझको ये टेबल चाहिए. देन आई नीड टू क्लिक ऑन दिस डेमो टेबल, देन क्लिक ऑन दिस डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट से मुझको डिपार्टमेंट नेम चाहिए, देन यू नीड टू क्लिक ऑन हियर. लाइक दिस यू नीड टू चेक दिस टेबल्स. सी कौन सा टेबल से मुझको कौन सा कॉलम चाहिए मेरे रिपोर्ट बनाने के लिए. सो इधर मुझको ई नेम चाहिए, तो ये टेबल भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. ऐसा आपको टेबल सिलेक्शन के लिए ये प्रीव्यू विंडो यूज होता है. So once I click on OK, all the tables, whatever the tables I have selected, all the three tables would get say would come here. Then once I got the tables, if I click on this data source settings, now it is showing two paths. Even though the tables are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tables, I'm getting only two paths. Why? The first path is related to financials, and then enter data and dummy table is related to enter data. This is related to these two tables are related or created in Power BI itself. इसके वजह से इसका फाइल पाथ्स नहीं दिखेगा. Then a demo table, department and EMP. ये तीनों tables का path एक ही है, that is SQL Server. So this is the path. This is the first one. The first one is the SQL Server or server name. Desktop D5KEGNN. This is the server name. And then semicolon. उसके बाद जो भी आता है, it is called database name. ओके, सो ये डेटा सोर्स सेटिंग्स में हमको क्या दिखते हैं, जो भी डेटा सेट्स आपके पास है इस प्रोजेक्ट को या फिर रिपोर्ट को बनाने के लिए उसका फाइल पाथ इधर दिखेगा. ओके, दिस टू आर द फाइल पाथ्स, दैट इज डेटा सोर्सेस इन करंट फाइल. करंट फाइल मतलब अभी जो प्रेजेंटली हम बना रहे हैं उस फाइल में. ग्लोबल परमिशंस मतलब पहले से फर्स्ट से अभी तक जितना भी रिपोर्ट्स हम बनाए हैं उसका पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन रहती है. लेकिन the interview question, what is the interview question here? What is the difference between data sources in current file and global permissions? इन दोनों के बीच में difference क्या है? That I'll explain in some time. So इधर data source settings में आपको क्या दिखेगा, जो भी data sets आप यूज किया उसका file paths इधर दिखेगा. Then इसमें options क्या है? First is clear permissions. So clear permissions क्या है? सो आपको एक्सेल शीट कनेक्ट करने के लिए आपको परमिशंस का ज़रूरत नहीं है. एक्सेल शीट आप डाउनलोड किया है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको परमिशंस का ज़रूरत नहीं है. दैट इज परमिशंस मतलब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वो देने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज कंपलसरी और नेसेसरी. दैट इज इधर yeah, so that is compulsory, that is login ID and password giving is compulsory in real time. So that is called clear permissions. Clear permissions किसके लिए हम देते हैं, जो भी फाइल हम कनेक्ट करते हैं अगर उस पे लॉगिन आईडी पासवर्ड रिलेटेड फाइल्स रहा है, देन उस परमिशंस को हम क्लियर करना है, देन वी विल यूज दिस क्लियर परमिशंस.
Then what is the significance? Why we clear the permissions? What is the real-time application? Then ये कंपनी टू कंपनी पॉलिसी वेरी होते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी इज हाईली प्रोटेक्टेड, डेटा प्रोटेक्टेड. दैट इज बिकॉज इट इज हाईली सेंसिटिव डेटा, इंश्योरेंस एंड फिनेंस. सो इट इज हाईली सेंसिटिव. सो मेरे कंपनी में एवरी 90 days पासवर्ड्स गेट चेंज्ड और सर्वर्स गेट माइग्रेटेड. सो एक ही जगह पे या फिर एक ही सर्वर में डेटा नहीं रखते, वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते. क्यों? रीजन इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस. So every time I change the password or I change the servers or I migrate the servers, then I need to clear the permissions. Because if I don't clear the permissions, it will throw an error. That is, data is, मतलब जो path आप connect किया है, every time the Power BI goes to that path and fetches the data for refreshing. Then आप उस डेटा को उस एक जगह से या फिर एक सर्वर से दूसरा सर्वर को शिफ्ट कर लिया या माइग्रेट कर लिया. Then every time it goes to that path and tries to fetches the data. Then already migrate कर लिया तो it will throw the error. It will throw the error. So that is the purpose. That is one purpose. So if I click on this Excel sheet path, that is Excel sheet. If I clear the permissions, that is, it will ask, are you sure you want to clear permissions for this entry? If you clear, it will you will have no way of getting it back. So if I delete it, it won't have any effect on this financials data set because it is not password protected. So if I delete, so the permissions got deleted. So how I can check? So go to this financials data set and then click on this refresh. Once you click on this refresh, it won't have any effect. The data is as it is because it is not having any login ID and password. So the same thing if I do for this demo table or department or EMP table. So I'm going to this server path and I'm clearing permissions. Then once I clear the permissions, once I go to this EMP and click on this refresh, then the data won't get displayed. The reason is that it is protected. It is encrypted. The data is encrypted. Encrypted मतलब वो directly आपको data fetch नहीं करेगा. You need to connect to the server. So how you can connect to the server again? Either you can edit credentials here or go to this data source settings and change the path or give the credentials. Once you click on this edit credentials, as I'm using Windows authentication, use my current credentials, I can directly connect. So once it is connected, your data would get reflected again. So that is the difference between other files part, that is the Excel sheet or a CSV files and the servers. So that is the reason they will use this servers in real time mostly. Any server, either it can be Azure Databricks or SQL Server or Snowflake, whatever. So Excel से भी लेते हैं, but that is not protected. Okay, right. This is about clear permissions. Then edit permissions. So what is edit permissions? In real time, why we use edit permissions? Either there is change in password of this SQL server. Then in order to enter the new password, then I have to use edit permissions because the SQL server passwords would get changed or servers might get migrated. In these two case scenarios, you need to use edit permissions and enter the new password or new credentials. That is about edit permissions, clear permissions, edit permissions, and then export PBIDS. What is PBIDS? Power BI data set. Power BI data set मतलब, for example, this is one data set that is financials. ये data set use करके मैं एक report बना रहा हूँ. Then ये report मुझको मेरा colleague के साथ share करना है. So I have two options. Either I can use share.pbix file. तो वो फाइल शेयर किया, वो फाइल उसने क्लिक किया, then he can see the same report. Then
If I share that PBIDS, that is data set, then in addition to this file, the data set also would be there. That is the financials data set would be transferred or it would be shared with him. मतलब ये डेटा सेट भी उसके साथ शेयर किया जाता है. So .pbx फाइल में only the file would be there. उसके अंदर जो भी डेटा है it is already inside the file. लेकिन PBIDS में data set transfer होता है. You can share the same data set. So that is what PBIDS. So once you click on export PBIDS, it will ask to save this. Once you save this financial sample, then you can say, share that this PBIDS file with your colleagues. So this you can try. So save it this PBIDS and share it with your friends. So once they click on this PBIDS, they can access this financial data set. So in real time, generally we won't use this PBIDS until and unless we have to use Power BI paginated reports. हम Power BI paginated reports prepare करने के लिए we use this data set. So why we use this data set? So ये data set हम use करके we'll just directly publish the report. Then we connect that report to the paginated reports. So what is paginated reports? I'll just give you the basics because that is completely different topic. Power BI report builder, that is a different tool. That is not Power BI desktop. That is a completely different tool. Power BI report builder is a complete different tool. Just like SSRS. Okay. So this is about PBIDS. Then ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं. So Power BI में actually the question is wrong, but they will ask you this. Power BI में आप two types of files देखते हो कौन सा है. So which is absolutely wrong. That is PBIDS is not a file. It is called a data set. Okay. But they ask you as a file. Two types of files. What are the two types of files you see in Power BI? That is one file is .pbix. That is one extension. That is called PBI file. Power BI file. The other thing is called PBIDS. So this is called data set. In Tableau also you will have same. Extensions would be different, but it would be same. The concept is same. Then change source. What is this change source? Change source मतलब ये फाइनेंशियल डेटा सेट आप किधर से लिया एंड एक जगह पे स्टोर किया, देन उस जगह से आप पावर बीआई में लेके आए. वो जो पाथ है एक जगह से पावर बीआई को लेके आ रहे, देन दैट पाथ इज कॉल्ड एज दिस फाइल पाथ. देन कुछ दिन के बाद उसका पोजीशन चेंज किया, डाउनलोड्स फोल्डर से आप कुछ डेस्कटॉप में रख दिया ये फाइल को. then this path has to be changed. अगर ये path change नहीं करते हो, then Power BI goes to the downloads folder only and it will start searching. If it don't get the file, it will throw an error. So in order to rectify that error, you have to use this change source. So once you click on this change source, you will get this file path option. So इधर old path को निकाल के जो भी न्यू पाथ है उसको ऐड करना है. दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुमारो. दैट इज ये फाइनेंशियल डेटा सेट है, ये डाउनलोड्स फोल्डर में आपके सिस्टम में रहेगा, दैट इज लोकल सिस्टम में रहेगा. उस डाउनलोड्स फोल्डर से आप उसको इधर डेस्कटॉप में पेस्ट करो या फिर किसी फोल्डर में पेस्ट करो and then come to the Power BI and click on refresh. So once you click on refresh, आपको error throw करता है. Once it throws an error, then go to this data source settings and click on change source. First of all, वो data set जिस data set का path है उसको click करना है and then change source पे जाना है and then old path को निकालना है and then new path का आप paste करना है and then click OK and then close and then start refresh. Then it will show the data. Right, that is about the change source. So real time में हम ये दो तरीका का यूज करते हैं. One is to change the server name
from dev environment to production environment. So dev environment मतलब development environment, prod environment मतलब production environment. तो ऐसा क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज डेवलपमेंट में हम कुछ चेंजेस करते हैं या फिर डेटा को रैपिडली चेंज करते रहते हैं because we will be doing some transformations or modifications or experiments. So when it comes to production environment, it would be stabilized. The data would be stabilized. मतलब that is final picture. So उस पे हम ज़्यादा changes नहीं करते. So जब हम Power BI report बनाना start करते हैं, we always connect to the dev environment. तो ये dev environment कौन create करते हैं? ये हमको क्लाइंट देते हैं कि रॉ डेटा, जो भी रॉ डेटा है वो क्लाइंट देते हैं। उस डेटा के ऊपर हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करने या ईटीएल एक्टिविटीज करने, ऑल कम्स अंडर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और डेव एनवायरनमेंट। तो उस डेव एनवायरनमेंट के अंदर हम चेंजेस करते हैं। दैट इज आवर डेवलपर्स वर्क और डीई टीम, दैट इज डेटा इंजीनियरिंग टीम, दे विल डू दैट टास्क। सो वंस इट इज डन, आपको रिपोर्ट टेस्टिंग करना है। देन यू नीड टू कनेक्ट टू द डेव एनवायरनमेंट टेबल एंड आप क्रिएट यू विल क्रिएट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स लेके जाके आप क्लाइंट को दिखाते हो। वंस द क्लाइंट सेज ओके, रिपोर्ट इज ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ये जो रिपोर्ट्स बना के क्लाइंट के पास लेके जाते हो, क्लाइंट वुड टेस्ट दैट रिपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। और आपके पास भी टीम रहते, आप भी करते हैं और क्लाइंट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूएटी, यूनिट टेस्टिंग। So once client says yes, the report is working fine, you can move it to production. Then आप same report को कुछ modifications, minor modifications और कुछ modifications का जरूरत नहीं, then as it is the same report would be replicated. Replicated मतलब repeat करते हो same report को, repeat करके production environment में change करते हैं. Then this server, this present server, for example, imagine this is a dev environment. So एक report बनाया, then client says that now the report is working fine, now move to production. Then ये path को chain source करके same path को आप production environment server को connect करते हो। Production environment server में भी table names same रहते, data भी same रहते, everything would be same because all the data would get refreshed from dev to prod. So that DET work, that is data engineering का काम है। So once you change this data source, change source from this dev environment to production, वो कैसे करेंगे? Change source करते and then this instead of this server name, you will give the production server name. वो हमको कैसे पता चलते हैं? वो आपको चिंता लेने का जरूरत नहीं है। DE team would give you that server name or you will also get to know that server name. वो server name इधर paste करके OK करते हैं। So you will change that source from dev to production. That is how in real time we work. So here we have four options in data source settings, that is clear permissions, edit permissions, export TBITS and change source. Then if we go to global permissions, we have only three options. What is the difference between data source in current file and global permissions is that in global permissions, you have only those paths where you need to give credentials. आपको credentials देने का जरूरत है, सिर्फ वही data sources इधर दिखेगा। लेकिन data sources in current file में all the data sources would get displayed. That is, जो भी credentials जरूरत है या नहीं, दोनों दिखेगा. That is the difference between data sources in current file and global permissions. So that is the data source settings. Next is parameters. That is how to create the parameter. Parameters मतलब रन टाइम एग्जीक्यूशन। रन टाइम एग्जीक्यूशन मतलब आप जब रिपोर्ट रन करते टाइम जो भी वैल्यूज देखना चाहते हो, then you have to use parameters. That is simple way of understanding parameters. मतलब for example this country column है, okay, so
ये कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सब वैल्यूज है. बट इन रियल टाइम यू हैव thousands of values. ओके, मतलब रोज वुड बी लैक्स, लेकिन वैल्यूज ये कनाडा बहुत बार रिपीट हुआ है, लाइक वन कनाडा, टू कनाडा, ऐसा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है. तो वैसा सारा वैल्यूज रिपीट होते रहते, एंड यू डोंट नो व्हाट इज एग्जिस्टिंग एट द लास्ट रो और मिडिल रो. देन आपको कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट देखना है, मतलब फिल्टरिंग. फिल्टरिंग मतलब मुझको ये टेबल के अंदर सिर्फ कनाडा रिलेटेड वैल्यूज देखना है और फ्रांस रिलेटेड वैल्यूज देखना है. देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपोर्ट एग्जीक्यूशन we don't know how many values are there, you can't check manually. And filter यूज करके भी, दिस इज इफ यू यूज दिस ड्रॉप डाउन, इधर आपको वैल्यूज दिखेगा, जितना भी वैल्यूज है वो सब वैल्यूज इधर दिखेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज. दिस आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज. डिस्टिंक्ट वैल्यूज मतलब डुप्लीकेट्स रहा तो डुप्लीकेट्स रिमूव करके जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो डिस्प्ले करते हैं ये ड्रॉप डाउन में. सो इधर आपको छोटा वैल्यूज है, लाइक 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है. अगर 60 वैल्यूज रहा डिस्टिंक्ट, अगर 160 वैल्यूज रहा और 200 वैल्यूज रहा, you can't just keep on scrolling and find it. So at that time, the most feasible option is to create parameter. And वो parameter का values आप client को देते हो. Then he will just enter those values. So how to create a parameter and how to see that values, that we will see in tomorrow's session. Okay.